थ्योरी पेशी के बारे में सिद्धांत जो साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा के जो प्रिंसिपल की स्टडी की उसके बारे में हमें स्टडी करना है। 12वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में जो भी हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन नीट में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, जो भी हो उसके बारे में हमें जो सीबीएसई बुक में दे दिया है उस हिसाब से हम अभ्यास करेंगे। पहले हमें यह देखना है कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी the theory which explain the structure of the cell, function of the cell, physiology of the cell, morphology of the cell, and role of the cell. The theory which explain the principle of cell. The theory which explain the structure, function, and principle of cell is known as cell theory. तो सेल के बारे में जो भी साइंटिस्ट ने, शास्त्रज्ञ लोगों ने अभ्यास किया है उसके बारे में जो भी प्रैक्टिकली ज्ञान प्राप्त किया है ये ज्ञान हमें देखना है, उसके बारे में चिंतन करना है और चिंतन करा के एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इसके बारे में तो हमें सोच के उत्तर देना है। पहले सेल थ्योरी बोले तो क्या है ये पहले स्टडी करना है। थ्योरी explain the structure and function of the cell is known as cell theory. Who explained the cell theory first? पहले स्टडी कौन किया है सेल के बारे में? पहले स्टडी कौन किया है?
सेल के बारे में स्टडी शुरुआत हो गई जब माइक्रोस्कोप तैयार हो गया। पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर, पीस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व अंडर his own developed microscope. Then Leeuwenhoek also studied the cell, first observed the living cell. In the 17th century, microscopes are developed, and in the 19th century, cell theory was explained. The first scientist Sheldon, M.J. Sheldon, in 1838. The Sheldon was a botanist and Swan, Theodore Swan, was zoologist. They explained the cell theory. They put forth the cell theory. तो पहले हमें सेल थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है ये देखना है. स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी: all organisms are made up of cell and cell product. All organisms are formed by cell and cell product. Cell and cell product. The cell is the structural, functional, fundamental unit of life. So जितने भी जीव लोग हैं, जितने भी जीव है वो सेल से बने हुए हैं और जो सेल प्रोडक्ट तैयार करता है उससे शरीर बनता है. सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है: द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय सेल एंड द सेल प्रोडक्ट. तो पहले हमें स्टेटमेंट के बारे में सीखना है. अभी पहले ये सेल थ्योरी किसने पुट फोर्थ किया? दी M.J. Sheldon, botanist, in 1838 explained that all plants or plant bodies made up of cell and cell product. जितने भी पार्ट है वनस्पति के वो सभी पार्ट सेल से बनते हैं. लेकिन शेल्डन ने ये बताया है सेल में प्रोड्यूस्ड
another cell by budding phenomena from the nucleus. ऐसे सेल्डन ने बताया है, because Sheldon was unknown about the cell division. Sheldon only explained that all plant bodies formed by cell and cell product. बाद में great zoologist Theodore Swan in 1839 explained that all animals and plants formed by cell and cell product. So दोनों का भी प्रिंसिपल एक ही है. Both scientists explained about the cell and they proved that all organisms formed by cell and cell product. So cell is the structural, functional, fundamental unit of life. ये हम सेल की डेफिनेशन कर सकते हैं. सेल की स्टेटमेंट हमने देखी है. स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ऑफ द सेल थ्योरी. ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट. Cell and the cell product. Later on, another scientist explained the function of the cell and division of the cell. Sheldon and Swan explain the classical cell theory. Sheldon and Swan, M.J. Sheldon and Theodore Swan explain classical theory of cell, but they were unknown about the cell division. And in 1855, the another scientist, Rudolf Virchow, in 1855 explained that cell is developed from pre-existing cell. New cells may produced from pre-existing cell by a process known as cell division. ऐसा इन्होंने बताया है. रुडोल्फ विर्चॉव, great scientist, he explained the modern theory of cell. तो पहले शेल्डन and Swan explained the classical theory of cell, and Rudolf Virchow explained the modern theory of cell.
लेकिन Rudolf Virchow explained the modern theory of cell by using the principle of classical theory of cell. It means जो रुडॉल्फ विर्चाव ने जो थ्योरी एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेन करते समय सेल्डन एंड स्वान का सपोर्ट लिया है. And later on, the statement explained by Rudolf Virchow about the cell, modern cell theory, that is, all cells, all organisms are formed by cell and cell product, and these cells are developed from pre-existing cell. So नई सेल तैयार होना है तो पहले ही सेल तैयार होना है. नई सेल तैयार होना है तो पहले सेल होना जरूरी है. न्यू सेल में प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, ऐसा इन्होंने बताया. Cell theory explained on the basis of some principles, and the scientists in 19th century explained the division of the cell, and modern cell theory explain the principle, some principle. These principles are all organisms formed by cells and cell product. These cells are produced, new cells are produced from pre-existing cell. Each and every cell is formed by protoplasm, cell membrane and cell wall. In the animal, cell wall is absent. Naked cell of plant is known as protoplast. In the protoplast, there is a nucleus which is regarded as genetic library. Genetic information is stored in the nucleus, and all physiological process occur in single cell. Synthesis, breakdown, excretion. So all metabolic activities occur in the cell, in the cytoplasm, in the protoplasm. Single cell may undergo division and form multicellular body of organisms. In the multicellular organism, but in the unicellular organism, single cell may perform all functions including excretion, osmoregulation, synthesis process. All metabolic activity occur in single cell. The hereditary material inherit from one cell to one generation to next generation.
to the process of cell division and fertilization, reproduction process. ये सभी प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी एक्सप्लेन इन द मॉडर्न सेल थ्योरी. जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सेल का रोल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में कौन सी घटनाएं घटित होते रहते हैं, इसके बारे में सेल थ्योरी बताते हैं, प्रिंसिपल के बारे. जैसे कि हमने देखा है कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. हमारे बॉडी में सबसे बड़ी सेल रहती है नर्वस सेल. हमारे बॉडी में सबसे लंबी सेल होती है नर्वस सेल. बट इन द लिविंग बीइंग लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल. ऑस्ट्रिच एग सेल. स्मॉलेस्ट सेल जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरियल सेल, ये सभी बताया है सेल थ्योरी में. सेल थ्योरी में सभी प्रिंसिपल के थ्रू एक कंसेप्ट क्लियर किया है. लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी के बारे में. जो थ्योरी बताई है कि सेल थ्योरी में जो भी प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया है कि वायरस जैसा ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. ऑर्गेनिजम्स के बारे में सेल थ्योरी ने बताया नहीं है. जैसे कि कुछ सेल है कि जिस सेल में न्यूक्लियस एक नहीं रहता, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहती है. जैसे कि फंगस सेल, कुछ फंजाई जो रहते हैं उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लिया रहते हैं. तो उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है. ऐसे कुछ ऑब्जेक्शन है सेल थ्योरी के बारे में. तो वो क्लियर हो गया बाद में, जो जब हम स्टडी करते रहते हैं. वायरस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Special type of organisms which may cause disease after came in contact with the living body. तो खुद की मेटाबॉलिज्म नहीं है, खुद की मेटाबॉलिज्म नहीं है वायरस में. कुछ ऐसे सेल थ्योरी के बारे में ऑब्जेक्शन भी ले लिया है. जो सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस किया है, तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं और 1 मार्क
स्टेटमेंट में आस्क, सेल थ्योरी स्टेटमेंट में आस्क, साइंटिस्ट के नेम जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट साइंटिस्ट है शेल्डन, स्वान, रुडोल्फ, विर्चॉव, ये सभी साइंटिस्ट के नाम रिमेंबर, यू रिमेंबर रेगुलरली, स्टेटमेंट यू रिमेंबर, प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी यू रिमेंबर। जब हम ऐसे स्टडी करते हैं तो ध्यान में रहता है और इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो भी ये YouTube चैनल पे वीडियो बनाए हैं आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।